This is Abhishek Mishra, and you are watching Abhishek Mishra's classes. Don't forget to subscribe and press the bell icon so you get notifications as soon as new video is uploaded. And also, thank you very much for subscribing my channel. Jan, let's start with the chapter. We are today going to start with chapter number 1, Resources, class 8, Geography. In this chapter, we are going to study about the resources, different types of resources like natural resources, human-made resources or man-made resources. If you are talking the human resources, conserving, how we are going to conserve resources, then resource conservation, the ways are there, and the sustainable development. These are the topics that we are going to study in this chapter. Now, the first thing, resources. What makes a thing a resource? द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप किसी भी कमोडिटी को, किसी भी चीज को रिसोर्स कैसे कहेंगे? तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. फॉर एग्जांपल वाटर, टेक्स्ट बुक एटसेट्रा. अगर किसी भी वस्तु, किसी भी सामान की आपके पास यूटिलिटी है, उपयोगिता है, यूजेबिलिटी है, तभी वह ऑब्जेक्ट आपका रिसोर्स है, तभी वह सब्सटेंस आपका रिसोर्स है. इस धरती पर ऐसे बहुत सारी चीजें रही हैं जो कि किसी जमाने में यूजफुल नहीं थी. उस जेनरेशन को, उस सिविलाइजेशन को उन चीजों की जरूरत नहीं थी जिनकी जरूरत आज हमें है. इसलिए उस जमाने में उसे रिसोर्स नहीं कहते थे, आज वो हमारे रिसोर्स के रूप में यूज की जाती है. Some resources have economic value which some do not, while some do not. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not, but both satisfy human needs. So these are considered as resources. कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है. दूसरे के टर्म्स में कहो तो कुछ की वैल्यू टर्म्स ऑफ मनी नहीं होती है. कोई भी मेटल आप खरीदते हो, उसके बदले में पैसे देते हो. कई जगह ऐसे हैं, आप सड़क पे घूमते हुए जा रहे हो, बड़ा खूबसूरत सा दृश्य दिखता है, नदी के किनारे है, बड़ा सनराइज हो रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, बट इट कैनॉट बी टर्म्ड इन इकोनॉमिक वैल्यू. आप इसको पैसे के टर्म में नहीं बदल सकते. लेकिन दोनों के दोनों क्या करते हैं? ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी उपयोगिता है, इसलिए हम इन्हें रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं. Some resources can become economically valuable with time. For example, grandmother's home remedies are not economically valuable today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप पढ़ोगे, जानोगे, तो आप पाओगे कि उनका कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है. जो जैसे तुलसी की पत्ती को चाय में डालकर पीना, उसका कोई इकोनॉमिकल वैल्यू आज से 20-30 साल पहले तक नहीं था, लेकिन आज है. क्यों है? क्योंकि आज उसको किसी फर्म ने पेटेंट करा लिया है और उसका यूज कर रहे हैं, उसको मेडिकल फर्म्स जो है यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उनको रिसोर्स के रूप में, इकोनॉमिकल वैल्यू के रूप में भी लेते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, टाइम एंड टेक्नोलॉजी. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है वक्त, एक है टेक्नोलॉजी. मैंने क्लास के शुरू में ही बोला कि एक जमाने, एक किसी भी सिविलाइजेशन में कई ऐसी कमोडिटीज थी जिनका कोई यूज नहीं था, लेकिन आज विद टाइम हम पाते हैं कि उनका यूज है, और टेक्नोलॉजी ने इतना चेंज कर दिया कि अब हम उसका यूज कर पाते हैं. जैसे स्टीम इंजन्स थे, भाप के जो इंजन थे, जब हमने टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर लिया तो हमारे शिप्स उन स्टीम इंजन के द्वारा चलने लगे. हमने टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर लिया तो अब हम यूरेनियम के द्वारा, न्यूक्लियर हमारे रिएक्टर्स के द्वारा हमारी जो है सबमरीन्स हैं, हमारे शिप्स हैं, वो चला करते हैं. तो विद टेक्नोलॉजी, विद टाइम, एवरीथिंग चेंजेस. People themselves are the most important resources. Their ideas, knowledge, invention, discoveries that lead to the creation of more resources. Each invention leads to many other. For example, the discovery of fire led to practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. You see ना, अगर आप कभी भी historically आप पढ़ने की, समझने की कोशिश करोगे, तो steam engine was one of the most important invention in the modern day civilization. Once the power of steam we got it, we changed everything. Everything changed with the speed. We started moving in the seas. The large seas were there, और हम उसमें मूव करने लगे. सामान का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह तेजी से होने लगा. रेलवेज का इन्वेंशन हुआ. तो these were the things that
helped us. Now, there are how many types of resources are there? There are three types of resources. Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources, like air, water, soil, minerals, etc. Second one is human-made resources. These resources which are created from natural resources through human resources are known as human-made resources. For example, building, bridges, roads, etc. Human people are human resources. It refers to the quality and abilities of the people. When we are talking about human or people, humans, they are also, people are also a resource, because if better quality of individuals are there, their abilities are far better than anything, they can create new commodities, they can invent different things, they can create buildings, they can create bridges, और फिर हम उनको भी जो है क्या कह सकते हैं, फिर वो भी तो हमारे रिसोर्स हुए. That's what the human resources are. Now, next one is natural resources. Many of the natural resources are free gifts of nature. These can be used directly, but in some cases we have to use tools and technology may be needed to use a natural resource to utilize it in the best possible way. Natural resources nature के द्वारा हमें मुफ्त में दी हुई है, फ्री गिफ्ट है. कईयों का तो हम यूज डायरेक्टली करते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, लेकिन कुछ के साथ ऐसा है कि हमें कुछ टूल्स की, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ जाती है, वरना बेसिकली द नेचुरल रिसोर्सेज इट इज अ फ्री गिफ्ट. उसके बदले में नेचर हमसे कुछ चार्ज नहीं करती, बस नेचर एक चीज एक्सपेक्ट करती है कि हम उसको इकोनॉमिकली यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी वो मिल सके. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, लाइक origin, like stock, like distribution. These were the things. On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups. One is actual resource, those resources whose quantity is known. These resources are being based in the present. For example, the dark soils of the Deccan Plateau in Maharashtra is actual resources. Now, when we talk about the potential resources, those whose entire quantity may not be known, हम उसके बारे में पूरा नहीं जानते, एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड इन टुडेज वर्ल्ड. हम आज उसका यूज भी नहीं कर रहे हैं. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट एडवांस इनफ टू इजीली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज. हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जो रिसोर्सेज हम उनको पूरी तरह यूज कर सकें. जैसे यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि इसका भविष्य में हम तो कभी यूज कर सकेंगे, आज हम नहीं कर पा रहे. Based on their origin, it can be classified into two groups: abiotic resources, in which non-living resources जिसे हम कहते हैं like soil, water, rocks, etc., and biotic resources, that is living resources. For example, it includes plants and animals and so on. On the basis of stock अगर हम देखें तो हम बात करते हैं renewable resources की या non-renewable resources की. Those resources which get renewed or replenished quickly as fast as it can be possible, जैसे सोलर एनर्जी है, सोयल है, फॉरेस्ट है, तो हम इसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar or wind energy, while careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock also. Non-renewable resources, those which have a limited stock like coal and petroleum or uranium, all these, once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. It may be many generations after. जो हम आज भी coal use करते हैं, it is more than 10,000 years old. तो it is not easily replenishable. It takes much more time than the generations gone by. Therefore, they are considered as non-renewable resources. On the basis of distribution of resources, हम बात कहें तो ubiquitous resources, that means resources that are found everywhere, like the air we breathe, water we drink, and so on. Second one is localized. Resources that are found in only certain places are localized, like copper, not found everywhere, iron ore, not found everywhere, coal, not found everywhere. Some areas are there where they are found. The distribution of resources is unequal over Earth and depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. Then again, a new type of resource that is known as human-made resource or man-made resource. Natural substances become resources only when their original form has been changed.
For example, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. Technology is also a human-made resource. Like from bauxite, we extract aluminum. We have the process of converting bauxite into aluminum. Then that is a human-made resource. Then the next one is human resource. People use the nature in the best possible way using their knowledge, skill and the technology. Therefore, they are considered as human resource. Education and health किसी भी इंसान को एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. Now, the next one is conserving resources. We must conserve resources. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Sustainable development is the development meets the need for present and also conserve them for the future. रिसोर्स का केयरफुल यूज होना चाहिए, उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए. क्योंकि आप जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल देखो, आप घर में पंखा चलाकर बैठे हो, एसी चला करके कोई रूम में नहीं है, चल रहा है. एसी uses electricity. Electricity is produced by thermal power stations or through the nuclear power stations. It may be hydropower stations, but I'm taking the use of the resources that are not going to be replenished, coal and thorium or uranium and so on. Now, once they are used, they cannot be reused. Therefore, they are one of the most precious elements for the human civilization. Therefore, they must be conserved, they must be preserved for our future generation also, because they also require energy. Source of energy is required by them also. Till we don't have a new technology, we should not misuse all these resources. Now, principles of sustainable development. What are principles of sustainable development? That is, respect and care for all forms of life. Improve the quality of human life. Conserve the earth's vitality and diversity. Minimize the depletion of natural resources. Change in personal attitude and practices towards the environment, and enable communities to take care for their own environment. जब तक हमारी कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटी, जब तक इस चीज को नहीं केयर करेगी कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे बचे, ह्यूमन की लाइफ स्टैंडर्ड को हम कैसे बढ़ा सकें, हर एक तरह की जो लाइफ फॉर्म इस धरती पर है हम उसको रिस्पेक्ट दें, केयर करें, तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है. And it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on earth is conserved, preserved. The damage to natural environment system should be minimized. हम रोक नहीं सकते, जो डैमेज हम कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें थर्मल पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें और भी बहुत सारे, हमें गाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना है, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए. जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए. This is one of the most important thing that we must take care of. This is our duty to ensure that. This is all in today's chapter, in today's video. Goodbye everyone. Thanks for watching. We will meet again in my next video. Now, I will again request you all to subscribe my channel and hit the bell icon so that you can very quickly receive the notifications as soon as my new video is uploaded. Thank you all of you. Take care.